all your three eyes and manifest the powers of Mahasadashiva. Om Nityananda Paramashivoham. 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 Swami Om Jai Nityananda. Om Jai Nityananda. Swami Jai Jai Nityananda. Lokanath Sthita Kasho Bhagavan Kali Kalmashamagnaanam Nitya Uttarana Chikishaya. Swami Om Jai Nityananda. Chitram Vadhataroormule Vridha Sishya Gururyuva. Vridha Sishya Gururyuva. Nityanandam. Before we begin the Pada Puja and Paramashiva Puja today, we request all the Pada Puja participants and everybody else who is participating in this puja physically here and online to declare the following with integrity and authenticity. If you agree to this, please say yes loudly. I authentically cognize, which is internally processed, understand and declare the truth that cosmic energy exists. Yes. I authentically cognize, which is internally processed, understand and declare the truth that His Divine Holiness, Swamiji, Nityanandeshwara Paramashiva and Nityanandeshwari Parashakti, the Guru Paduka and the Atmalinga are the Chinmaya Vigrahas, embodiment and representation of that very cosmic energy. Yes, I authentically cognize, which is internally processed, understand and declare the truth that whatever I offer during the Pada Puja to His Divine Holiness, Swamiji, and Paramashiva Puja to Nityanandeshwara Paramashiva and Nityanandeshwari Parashakti will reach the cosmic source of energy directly. Yes, I authentically cognize, which is internally processed, understand and declare the truth of Soham Asmi, that even when I worship, I am Him. Yes. Let us now enter the Pratyaksha Pada Puja, followed by the Paramashiva Puja. Now please be seated in a meditative space of gratitude and deep restful awareness in your Ananda Gandha. The first is the Satguru Vandanam. Now please take some flowers in your hands and close your eyes and offer the flowers at His Divine Holiness, Swamiji's feet at the end of the mantra. Nityanandam Paramasukhadam Kevalam Jnanamurtim Dvandvatītam Gagana Sadrisham Tattvamasya Adhilaksham Ekam Nityam Vimalamachalam Sarvadhi Sakshibhutam
भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि. The next is the Guru Parampara Vandanam. Now please take some flowers in your hands and offer the flowers at His Divine Holiness Swamiji's feet at the end of the mantra. Nityanandeshwara Paramashiva Samarambham Nityanandeshwari Parashakti Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam. The next is the Arunagiri Yogeshwara Vandanam. Now please take some flowers in your hands and close your eyes and offer the flowers at His Divine Holiness Swamiji's feet at the end of the mantra. Lalate Tripundri Nitila Krita Kasturi Tilakaha Spuranmala Dhara Spurita Kati Kaupina Vasanaha Dadhano Dustaram Shirasi Panirajam Shashikalam Pradipa Sarvesham Arunagiri Yogi Vijayade. The next is the Tattva Chamanam, the ritualistic cleansing of the mouth. Now keep your right hand and pour 1 Uddhani of water from the Panchapatram. While chanting each of the following mantras internally, drink the water that flows to the base of the palm. Om Atma Tattvam Shodhayami Swadha. Om Vidya Tattvam Shodhayami Swadha. Om Shiva Tattvam Shodhayami Swadha. Chanting the following mantras internally, wipe the upper and lower lips twice using the base of the right hand and thumb. Right hand thumb, moving the right hand from right to left of the lips. Om Ham Hridayaya Namaha. Wash your right hand with the water in the Panchapatram. With the tips of the right hand, index, middle and ring fingers touch above the upper lips and below the lower lips. With the tips of the right hand, index finger and thumb joined together, touch the right nostril and left nostril. With the tips of the right hand, ring finger and thumb joined together, touch the right eye, right ear, left ear. Wash your right hand with the water in the Panchapatram. With the base of the right hand thumb and little finger, touch the navel, right chest, left chest. With the right hand fingertips together, touch the top of the head, right shoulder, left shoulder, the heart center. The next is the Shuklambaradharam. Please take the Akshata in your hand, right, clench your hands and tap the sides of your forehead 5 times. Shuklam Bharadaram Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam Prasannavadanam Dhyayet Sarva Vignopashantaye. Continue to keep the Akshata in your right hand. Now open only the little finger, ring finger and thumb. During the pranayama, use the thumb to close the right nostril and the ring and little finger to close the left nostril. Closing the right nostril, inhale slowly through the left nostril. Once you have inhaled fully, close both the nostrils and hold the breath inside as long as possible. Exhale through the right nostril alone, very slowly. During this inhalation, retention and exhalation, chant the following mantras 3 times internally. Om Hom Ishanamurdhaye Namaha. Om Hem Tatpurushavakraye Namaha. Om Hum Aghorahridayaye Namaha. Om Him Vamadevagakhyaye Namaha. Om Ham Satyojatamurtaye Namaha. Om Ham Hridayaye Namaha. Om Him Shirase Namaha. Om Hum Shikaye Namaha. Om Hem Kavachaye Namaha. Om Ham Netrebhyo Namaha. Om Hastraye Namaha. Om Hum Ishanamurdhaye Namaha. Om Hem Tatpurushavakraye Namaha. Om Hum Aghorahridayaye Namaha. Om Him Vamadevagakhyaye Namaha. Om Ham Satyojatamurtaye Namaha. Om Ham Hridayaye Namaha. Om Him Shirase Namaha. Om Hum Shikaye Namaha. Om Hem Kavachaye Namaha. Om Ham Netrebhyo Namaha. Om Hastraye Namaha. Om Hum Ishanamurdhaye Namaha. Om Hem Tatpurushavakraye Namaha. Om Hum Aghorahridayaye Namaha. Om Him Vamadevagakhyaye Namaha. Om Ham Satyojatamurtaye Namaha. Om Ham Hridayaye Namaha. Om Him Shirase Namaha. Om Hum Shikaye Namaha. Om Hem Kavachaye Namaha. Om Ham Netrebhyo Namaha. Om Hastraye Namaha. The next is the Sankalpa. Now keeping the Akshita in your left palm and closing it with your right palm, keep the both hands on the right thigh. Chant the following mantras and drop the Akshita down in the north at the end of the mantra. Mamopata samasta duridakshayadvara Bhagavat Shri Nityananda Paramashiva Prityartam Shri Nityanandeshwari Parashakti Sameta Shri Nityanandeshwara Paramashiva Prityartam Cha Shubhe Shobhane Muhurte Adhya Brahmanah Dvitiya Pararde Shri Shvetavaraha Kalpe Vaivashvata Manvantare Ashtavimshati Tame Nitya Yuge Pradhame Pade
जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे शकाब्दे अस्मिन् वर्धमाने व्यवहारिके प्रभवादीनां षष्ट्याः संवत्सराणां मध्ये विकारिनाम संवत्सरे उत्तरायणे लक्ष्मीवेङ्कटेश्वर ऋतौ वृषभमासे शुक्लपक्षे तृतीयां शुभतिथौ गुरुवासरयुक्तायां पुनर्वसु नक्षत्र वृद्धियोग गरजकरण एवं गुणविशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ श्री कैलासोन्नत द्वादशान्त श्यामलापीठारूढ श्री मीनाक्षी सुन्दरेश्वर भिन्न स्वरूप परशिवपुत्ररत्नकुमार गुरुमन्यतुल्यावतार श्री पार्वती स्तन्यपानलब्ध दिव्यज्ञान विश्रुत सकल निगमागमसारभूत द्राविड वेद प्रवक्त्रे श्रीमत् परमशिव करुणा समधिगत मुक्तामय चतुरश्रयान गीयमान छत्र चामर श्री चिह्न काहलादि समस्त बिरदावल्यलंकृत ज्ञान विज्ञान चक्रवर्ती सर्वजन संघ सद्यो निर्वाण दीक्षा व्ययापवर्गवश विश्राण जीमूत परमत कलभ केसरी शैव सिद्धांत स्थापनाचार्य श्री राजाधिराज पांड्य महाराज गुरु क्षपण शाख्यादि महांधकार निवारण ज्ञान भानु वीक्षणा नरहार ध्वजोच्छेदन पूर्वक श्रीमद् वृषभध्वज स्थापक शैव समय कर्ते सर्वज्ञ पीठारूढ़ श्री जगद्गुरु श्री ज्ञान संबंध देशिक स्वामी वागीश सुंदर माणिक्य वाचक स्वामिनां अवतार भूत श्री ज्ञान संबंध स्वामी पुनरुद्धृत श्यामला पीठ महासंस्थान ज्ञान साम्राज्य शासक सर्वज्ञ पीठारूढ़ तृणवद्योत्तर दुशततम गुरु महासन्निधान कैलास परंपरागत सूर्यवंश सर्वज्ञ पीठ सुरांगी साम्राज्य शासक महानिर्वाणि पीठस्य अष्टोत्तर सहस्र श्री महामंडलेश्वर अटल पीठस्य अष्टोत्तर सहस्रतम अष्टोत्तर सहस्र श्री अटल पीठाधीश्वर धर्म मुक्ति स्वर्ग पुरस्वर्ण पीठस्य त्रयोविंश गुरु महासन्निधान श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्य सच्चिदानंद प्रणव स्वरूप श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ नित्योत्सव नित्य मंगल नित्य कल्याण नित्य रजित नित्यानंद पीठ महासंस्थान महासिंहासन पीठ कर्तृ कैलास पुनरुद्धारक जगद्गुरु श्रील श्री भगवत श्री नित्यानंद परम शिव श्री ज्ञान संबंध देशिक परमाचार्य स्वामिनां प्रीत्यर्थं तेषां पादारविन्दयोः भक्ति सिद्ध्यर्थं गुरुकृपा कटाक्ष सिद्ध्यर्थं क्षेम स्थैर्य वीर्य विजय आयुरारोग्य ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं मम समस्त दुरितोपशान्त्यर्थं समस्त मंगलावाप्यर्थं भगवत् श्री नित्यानंद परम शिव प्रसादेन सकुटुम्बस्य ज्ञान वैराग्य जीवन मुक्ति प्राप्त्यर्थं श्री नित्यानंदेश्वरी पराशक्ति समेत श्री नित्यानंदेश्वर परम शिव अवतार भूत श्री सर्वदेव देवी स्वरूप भगवत् श्री नित्यानंद परम शिव प्रत्यक्ष पाद पूजां करिष्ये श्री नित्यानंदेश्वरी पराशक्ति समेत श्री नित्यानंदेश्वर परम शिव पूजां च करिष्ये ओम अवौपस्पृश्य. The next is the Ghanta Nada. Ring the bell with your left hand loudly as you chant the mantras. Om Agamartam tu devanam gamanatam tu rakshasam Ghantanadam karo jnato devata hvanalanjanam Ghanta devatabhyo namaha. The next is the Manasa Puja. Now please take some flowers in your hands, close it in the Kurma Mudra and offer it along with the mantras. Om Hritpadmamasanam dadyat sahasrarachyutamritaihi
पाद्यं चरणयो दद्यात् मनस्तु अर्घ्यं निवेदयेत् तेन अमृतेन आचमनीयं स्नानीयं तेन च स्मृतम् आकाशतत्त्वं वस्त्रं स्यात् गन्धः स्यात् गन्धतत्त्वकम् चित्तं प्रकल्पयेत् पुष्पं धूपं प्राणान् प्रकल्पयेत् तेजस्तत्त्वं च दीपात्तं नैवेद्यं स्यात् सुधाम्बुधिः अनाहतध्वनिर्घण्टा वायुतत्त्वं च चामरं सहस्रारं भवेत् छत्रं शब्दतत्त्वं च गीतकं नृत्यमिन्द्रियकर्माणि चाञ्चल्यं मनसस्तथा सुमेकलां पद्ममालां पुष्पं नानाविधं तथा अमायाद्यैर्भावपुष्पैः अर्चयेद्भावगोचरम् अमायं मनहङ्कारम् अरागं ममदं तथा अमोहकं मदं पञ्च अद्वेषाक्षोभकौ तथा अमात्सर्यं अलोभं च दशपुष्पं विदुर्बुधाः अहिंसा परमं पुष्पं पुष्पमिन्द्रियनिग्रहः दया पुष्पं क्षमा पुष्पं ज्ञानपुष्पं च पञ्चमम् इति पञ्चदशैर्भावपुष्पैः सम्पूजयेत् भगवन्तं श्रीनित्यानन्दपरमशिवम्. The next offering is the offering of the asanam. Now please take some flowers and akshata in your hands and offer it at His Divine Holiness Swamiji's feet along with the mantra. Asanam Om Sarvabhutantarastaya Sarvabhutantaratmane Kalpayamyubhaveshatam asanam te namo namaha. Om Hrim Idam Suvarnasanam Sarvadevadevi Swarupaya Bhagavate Shri Nityananda Paramashivaya Namaha. The next is the Swagatam. Now please take some flowers in your hands and offer the flowers at His Divine Holiness Swamiji's feet along with the mantra. Swagatam Om Shantatvat Sarvakatritvat Bhavot Paradikaranat Shiva Ukto Mahatantra Mantra Vidhis Sada Shivaha Tasmai Shivaya Gurave Vitaraga Kalaya Vai Ameyatvat Anantoyam Majatva Cha Prakirtitaha Yasya Darshanamichanti Deva Swabhishta Siddhaye Tasmai Te Parameshana Swagatam Swagatam Prabho Adya me sabalam janma jivanam sabala kriyaah Swagatam yatvaya tanme tapasam phalamagatam. Om Hrim Sarvadeva Devi Swarupa Bhagavan Shri Nityananda Paramashiva Swagatam Suswagatam Te. The next is the Padyam. Now please take an uttarni of water in your hands and offer it at His Divine Holiness Swamiji's feet along with the mantra. Padyam Om Yad Bhakti Lesha Samparkat Paramananda Samplavaha Tasmai Te Parameshana Padyam Shuddhaya Kalpaye. Om Hrim Etat Padyam Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Shri Nityananda Paramashivaya Namaha. The next offering is the Arghya. Now please take the conch in your hands and offer the Arghya at His Divine Holiness Swamiji's feet along with the mantra. Arghyaha Om Durvakshata Samayuktam Bilva Patram Tathaparam Shobhanam Shankapatrastam Grihanarghyam Maheshwara. Om Hrim Yeshorgyaha Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Shri Nityananda Paramashivaya Swaha. The next offering is the Achamaniyam. Now please take an uddarni of water in your hands and offer it at His Divine Holiness Swamiji's feet along with the mantra. Achamaniyam Om
मन्दाकिन्यास्तु यद्वारी सर्वपापहरं शुभम् गृहाणाचमनीयं त्वं मया भक्त्या निवेदितम् ॐ ह्रीं इदम् आचमनीयोदकम् सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्दपरमशिवाय स्वधा. The next is the offering of the Madhuparka. Now please take the Madhuparka and offer it at His Divine Holiness Swamiji's feet along with the mantra. मधुपर्कः ॐ सर्वकल्मषनाशाय परिपूर्णसुधात्मकम् मधुपर्कमिमं देव कल्पयामि प्रसीद मे ॐ ह्रीं एष मधुपर्कः सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्दपरमशिवाय स्वधा. The next is the Gandha Tailam. Now please take the Gandha Tailam, the scented oil in your hands, and offer it at His Divine Holiness Swamiji's feet along with the mantra. गन्धतैलम् ॐ स्नेहं गृहाण स्नेहेन लोकानां हितकारक सर्वलोकेषु शुद्धस्त्वं ददामि स्नेहमुत्तमम् ॐ ह्रीं इदं गन्धतैलं सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्दपरमशिवाय निवेदयामि. The next is the Snaniyam. Now please take an uddani of water in your hands and offer it at His Divine Holiness Swamiji's feet along with the mantra, and please ring the bell as you do so. स्नानीयम् ॐ इदं सुशीतलं वारी स्वच्छं शुद्धं मनोहरं स्नानार्थं ते मया भक्त्या कल्पितं प्रतिगृह्यताम् ॐ ह्रीं इदं स्नानीयोदकं सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्दपरमशिवाय निवेदयामि. The next is the Vastram. Now please take the offering of clothes in your hands and offer it to His Divine Holiness Swamiji's feet along with the mantra. माया चित्रपटाच्चन्न निजगुह्योरुतेजसे निरावरण विज्ञाय वासस्ते कल्पयाम्यहम् ॐ ह्रीं इदं वस्त्रोत्तरीयं सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्दपरमशिवाय निवेदयामि. The next offering is the Abharanam. Now please take the jewelry in your hands and offer it at His Divine Holiness Swamiji's feet along with the mantra. आभरणम् ॐ स्वभावसुन्दराङ्गाय नानाशक्त्याश्रयायते सुवर्णं भूषणं तुभ्यं कल्पयामि प्रसीद मे ॐ ह्रीं इदं सुवर्णाभरणं सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्दपरमशिवाय निवेदयामि. The next offering is the Gandha. Now please take the sandalwood paste in your hands and offer it at His Divine Holiness Swamiji's feet along with the mantra. गन्धः ॐ शरीरं ते न जानामि चेष्टां नैव च मया निवेदितान् गन्धान् प्रतिगृह्य विलिप्यताम् ॐ ह्रीं एष गन्धः सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्दपरमशिवाय नमः. The next is the offering of the Pushpam. Now please take some flowers smeared with sandalwood paste in your hands and offer the flowers at His Divine Holiness Swamiji's feet along with the mantra. पुष्पम् ॐ तुरीयवनसम्पन्नं नानागुणमनोहरम् आनन्दसौरभं पुष्पं गृह्यताम् इदमुत्तमम्
ॐ ह्रीं एतानि सचन्दनपुष्पाणि सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्दपरमशिवाय वौषटे. The next is the offering of the Bilva Patram. Now please take the Bilva leaves smeared with sandalwood paste in your hands and offer it at His Divine Holiness Swamiji's feet along with the mantra. बिल्वपत्रम् ॐ अमृतोद्भवं श्रीवृक्षं शङ्करस्य सदा प्रियं बिल्वपत्रं प्रयच्छामि पवित्रं ते सुरेश्वर. ॐ ह्रीं एतानि सचन्दनबिल्वपत्राणि सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्दपरमशिवाय वौषटे. The next is the offering of the Tulasi Patram. Now please take the Tulsi leaves smeared with sandalwood paste in your hands and offer it at His Divine Holiness Swamiji's feet along with the mantra. तुलसी पत्रम् ॐ नमस्ते बहुरूपाय वरदमूर्तये परमात्मने स्वाहा. ॐ ह्रीं इदं सचन्दनतुलसी पत्रं सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्दपरमशिवाय नमः. The next offering is the Dupa. Now please take the lit incense sticks in your hands and slowly wave towards His Divine Holiness Swamiji's feet along with the mantra and please ring the bell as you do so. धूपः ॐ वनस्पतिरसो दिव्यो गन्धाढ्यः सुमनोहरः आग्नेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्. ॐ ह्रीं एष धूपः सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्दपरमशिवाय नमः. The next is the offering of the Deepa. Now please take the lit lamp in your hands and slowly wave towards His Divine Holiness Swamiji's feet along with the mantra and please ring the bell as you do so. दीपः ॐ शुप्रकाशो महादीपः सर्वतस्तिमिरापहः सभाभ्याभ्यन्तरज्योतिर्दीपोऽयं प्रतिगृह्यताम्. ॐ ह्रीं एष दीपः सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्दपरमशिवाय नमः. The next offering is the Naivedyam. Now please take an Uddani of water, hover it clockwise over the Naivedyam. Please chant the mantra and ring the bell as you do so. नैवेद्यम् ॐ नैवेद्यं विविधं देव शर्करादिविनिर्मितं मया निवेदितं भक्त्या गृहाण परमेश्वर. ॐ ह्रीं इदं सोपकर्णनैवेद्यं सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्दपरमशिवाय निवेदयामि. The next offering is the offering of the Paniyam. Now please take an Uddani of water in your hands and offer it at His Divine Holiness Swamiji's feet along with the mantra. पानीयम् ॐ समस्तदेवदेवेश सर्वतृप्तिकरं परम् अखण्डानन्दसम्पूर्णं गृहाण जलमुत्तमम्. ॐ ह्रीं इदं पानार्थोदकं सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्दपरमशिवाय नमः. The next is the Punarachamaniyam. Now please take an Uddani of water in your hands and offer it at His Divine Holiness Swamiji's feet after the mantra. पुनराचमनीयम् ॐ उच्छिष्टमप्यशुचिर्वा यस्य स्मरणमात्रतः शुद्धिमाप्नोति तस्मै ते पुनराचमनीयकम्. ॐ ह्रीं इदं पुनराचमनीयोदकं
सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्द परमशिवाय स्वाहा. The next offering is the Aratikam. Now please take the lit lamp in your hands and wave towards Swamiji slowly along with the mantra, and please ring the bell as you do so. आरात्रिकम् ॐ ह्रीं एषा दीपमाला सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्द परमशिवाय नमः. ॐ राजाधिराजाय प्रसन्नसाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यम् कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः. कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि. भवं भवानी सहितं नमामि. भवं भवानी सहितं नमामि. आरात्रिकं समर्पयामि भगवत् श्री नित्यानन्द परमशिव चरण कमलेभ्यो नमः. The next is the Pushpanjali. Now please take a few flowers in your hands, close your eyes till the end of the mantra and offer the flowers at His Divine Holiness Swamiji's Padaka at the end of the mantra. पुष्पाञ्जलिः. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. अनेकजन्म सम्प्राप्त कर्मबन्धविदाहिने आत्मज्ञानप्रदानेन तस्मै श्री गुरवे नमः. मन्नाथ श्री जगन्नाथो मद्गुरु श्री जगद्गुरुः ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः. ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः. नित्यानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्. एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि. पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि भगवत् श्री नित्यानन्द परमशिव चरण कमलेभ्यो नमः. ॐ नित्यानन्दम्. We request all the Paramashiva Puja participants to please face the north direction. ओमाचम्य ॐ आत्मतत्त्वं शोधयामि स्वधा
ॐ विद्यातत्त्वं शोधयामि स्वधा ॐ शिवतत्त्वं शोधयामि स्वधा भूतात्मन् स्वामी ॐ जय नित्यानन्दा ॐ जय नित्यानन्दा सकलीकृत्य ॐ सहस्राय नमः शक्तये वौषट् ॐ हां शिवासनाय नमः ॐ हां शिवमूर्तये नमः ॐ हं सद्योजातमूर्तये नमः ॐ हिं वामदेवगुह्याय नमः ॐ हुं अघोरहृदयाय नमः ॐ हिं तत्पुरुषवक्त्राय नमः ॐ हुं ईशानमूर्धाय नमः ॐ हां हुं विद्यादेहाय नमः ॐ हौं नेत्रेभ्यो नमः ॐ हां हौं शिवाय नमः ॐ हां हृदयाय नमः ॐ ह्रीं शिरसे नमः ॐ हुं शिखायै नमः ॐ हैं कवचाय नमः ॐ हा अस्त्राय नमः ॐ हैं कवचाय नमः ॐ हां शिवाय वौषट् ॐ हां हौं शिवाय नमः ॐ हां शिवासनाय नमः ॐ हां शिवमूर्तये नमः ॐ हं सद्योजातमूर्तये नमः ॐ ह्रीं वामदेवगुह्याय नमः ॐ हुं अघोरहृदयाय नमः ॐ ह्रीं तत्पुरुषवक्त्राय नमः ॐ हुं ईशानमूर्धाय नमः ॐ हां हौं विद्यादेहाय नमः ॐ हौं नेत्रेभ्यो नमः ॐ हां हौं शिवाय नमः ॐ हां हृदयाय नमः ॐ ह्रीं शिरसे स्वाहा ॐ हुं शिखायै वौषट् ॐ ह्रीं कवचाय हुं ॐ हा अस्त्राय फटे ॐ हा अस्त्राय हुं फटे ॐ हा अस्त्राय फटे ॐ हां शिवाय वौषटे सामान्यज्ञ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ हा अस्त्राय फटे ॐ ह्रीं कवचाय हुं ॐ हां शिवाय वौषटे ॐ हां शिवासनाय नमः ललाटे त्रिपुण्ड्रीनिटिलकृतकस्तूरी तिलकः स्फुरन्मालाधारस्फुरितकटिकौपीनवसनः दधानो दुस्तारं शिरसि फणिराजं च शिखलां प्रदीपः सर्वेषाम् अरुणगिरियोगी विजयते इन्दुनिभपञ्चमुखहस्तदशयुक्तम् शूलमृगटङ्कमसि वज्रमभयं स्यात् पाशवरदाङ्कुशमनिज्वलनवामे श्वेतकमलासन सदाशिवस्वरूपम् ॐ हां शिवमूर्तये नमः ॐ हां हौं शिवाय नमः श्रीनित्यानन्देश्वरि पराशक्तिसमेत श्रीनित्यानन्देश्वर परमशिवाय नमः ध्यायामि आवाहयामि ॐ हां शिवाय नमः इति आवाहनमुद्रां प्रदर्श्य स्थापन सन्निधान निःश्रुतमुद्रां प्रदर्श्य अस्त्राय हुं फट् इति कालकण्ठिमुद्रां प्रदर्श्य ॐ हां शिवाय नमः इति लिङ्गमुद्रां नमस्कारमुद्रां ॐ ह्रीं कवचाय हुं इति अवकुण्ठनमुद्रां च प्रदर्श्य ॐ हां हौं शिवाय नमः श्रीनित्यानन्देश्वरि पराशक्तिसमेत श्रीनित्यानन्देश्वर परमशिवाय नमः आसनं समर्पयामि ॐ हां शिवाय नमः ॐ हां शिवाय स्वधा ॐ हां शिवाय स्वाहा श्रीनित्यानन्देश्वरि पराशक्तिसमेत श्रीनित्यानन्देश्वर परमशिवाय नमः पाद्य आचमनार्घ्यं दत्त्वा शिवाय नमः श्रीनित्यानन्देश्वरि पराशक्तिसमेत श्रीनित्यानन्देश्वर परमशिवाय नमः स्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरमाचमनीयं समर्पयामि ॐ हां शिवाय स्वधा ॐ हां हौं शिवाय नमः श्रीनित्यानन्देश्वरि पराशक्तिसमेत श्रीनित्यानन्देश्वर परमशिवाय नमः वस्त्रयज्ञोपवीत उत्तर्याभरणार्थमक्षतान् समर्पयामि ॐ हां हौं शिवाय नमः श्रीनित्यानन्देश्वरि पराशक्तिसमेत श्रीनित्यानन्देश्वर परमशिवाय नमः गन्धान् धारयामि गन्धस्योपरि हरिद्रा कुङ्कुमचूर्णं समर्पयामि
पुष्पैः पूजयामि ॐ भवाय देवाय नमः ॐ भवस्य देवस्य पत्ने नमः ॐ सर्वाय देवाय नमः ॐ सर्वस्य देवस्य पत्ने नमः ॐ ईशानाय देवाय नमः ॐ ईशानस्य देवस्य पत्ने नमः ॐ पशुपते देवाय नमः ॐ पशुपते देवस्य पत्ने नमः ॐ रुद्राय देवाय नमः ॐ रुद्रस्य देवस्य पत्ने नमः ॐ उग्राय देवाय नमः ॐ उग्रस्य देवस्य पत्ने नमः ॐ भीमाय देवाय नमः ॐ भीमस्य देवस्य पत्ने नमः ॐ महते देवाय नमः ॐ महतो देवस्य पत्ने नमः ॐ शिवाय नमः श्री नित्यानन्देश्वरि पराशक्ति समेत श्री नित्यानन्देश्वर परमशिवाय नमः अष्टपुष्पपूजां समर्पयामि ॐ ह्रां शिवाय नमः श्री नित्यानन्देश्वरि पराशक्ति समेत श्री नित्यानन्देश्वर परमशिवाय नमः बिल्वपत्रं समर्पयामि ॐ ह्रां घण्टापूजा ॐ अस्त्राय नमः अथ धूपः ॐ अस्त्राय भटे ॐ हृदयाय नमः ॐ दूरसिदूर्वदूर्वन्तं दूर्वदन्योऽस्मान् दूर्वदितं दूर्वयं वयं दूर्वामस्तं देवानामधिसस्तितमं पप्रथमं जुष्टतमं वह्नितमं देवहूतममतमसिर्हविद्दानं त्रिगुम्मस्वमाह्वा वित्तस्तत्त्वा चक्षुषा प्रेक्षे माभिर्मा संवित्ता मात्वा हि गुंदिशम् ॐ ह्रां शिवाय नमः श्री नित्यानन्देश्वरि पराशक्ति समेत श्री नित्यानन्देश्वर परमशिवाय नमः धूपमाग्रापयामि ॐ ह्रां शिवाय स्वधा ॐ हस्य अथ दीपः ॐ हस्ताय पटे ॐ हृदयाय नमः ॐ उद्दीप्य स्वजातवेदो भग्निर्निररितं मम त्वजोगश्च मह्यमावह जीवनं च दिशो दिशा मानो हि गुंसि जातवेदो गामश्वं पुरुषं जगते अभिप्रदग्नागैश्रिया मा परिपातय ॐ शिवाय नमः श्री नित्यानन्देश्वरि पराशक्ति समेत श्री नित्यानन्देश्वर परमशिवाय नमः दीपं दर्शयामि अथ शिवाय स्वधा अथ नैवेद्यम् ॐ अस्त्राय भटे ॐ हृदयाय नमः ॐ मधुवातारिताय ते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माद्वीर्नः सन्तोषतीः मधुनक्तमुदोषति मधुवत्वाति बहुमयः मधुद्यौरत्नं पिता मधुमानो वनस्पतिर्मधुवागुम्बस्तु सूर्यः माद्वीर्गावो भवन्तु नः मधु ॐ शिवाय नमः श्री नित्यानन्देश्वरि पराशक्ति समेत श्री नित्यानन्देश्वर परमशिवाय नमः नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यानन्तरमाचमनीयं समर्पयामि ॐ शिवाय स्वधा ॐ शिवाय नमः श्री नित्यानन्देश्वरि पराशक्ति समेत श्री नित्यानन्देश्वर परमशिवाय नमः ताम्बूलं समर्पयामि कर्पूरनीराजनम् ॐ अस्त्राय भटे ॐ हृदयाय नमः ॐ सोमो वा एतस्य राज्यमादत्ते यो राजासन् राज्यो वा सोमेन यजते देवसुवा
ॐ नित्यानन्द परमशिवोऽहम् 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 Shakti Sameta Shri Nityanandeshwara Paramashiva is the offering of the Paramashivoham Oneness Capsule. Devadevottama Devata Sarvabhoma Akhilanda Brahmanda Nayaka Shri Nityanandeshwari Parashakti Sameta Shri Nityanandeshwara Paramashiva Paramashivoham Advaita Darshana Priya Paramashivoham Advaita Darshanam Avadharaya.
HinduGenocide.com reports of January 19, 1990, Bharat witnessed the mass exodus of Kashmiri Hindus. 600,000 Hindus estranged overnight. On January 19, 1990, Bharat witnessed the mass exodus of Kashmiri Hindus. They were given 3 options: convert, leave, or die. An estimated 300,000 to 800,000 Kashmiri Hindus emptied out of the Kashmiri Valley overnight. Many died and do not live to tell the tales of horror. Those who lived have been telling their tales in vain, because no media, no political organization, no human rights organization has ears to listen to these tales or bring them to justice. What is even worse is that this was by no means the only exodus of Kashmiri Hindus. This was the 7th exodus of Kashmiri Hindus from the Kashmir Valley, now rightly called the Valley of Fear. Massacre of Hindus in Kashmir by Dimple Atra reads, the 7th exodus of Kashmiri Hindus, Pandits, which began in 1990, saw many innocents being mercilessly killed. Scores of Kashmiri Pandit bodies, drowned in River Jhelum, were found floating. Many dead bodies, with hands and feet tied, were recovered from different parts of the valley. There were instances of victims having been branded with hot irons while still alive, or having had their eyes gouged out. The truth of the 7th exodus of the Kashmiri Hindus didn't end there. The scattered acts of violence against Hindus continued for years and continues to today. If you feel responsibility is a power, you make your life successful. Consciousness, Paramashiva, descends in human form as an avatar. Paritranaya sadhunam vinashaya cha dushkritam dharma samsthapanarthaya sambhavami yuke yuke, for the upliftment of the saintly and for the removal of criminal powers, for the establishment of the integrity, I come into existence. I happen with a form in every age. Avatars embody the compassionate and auspicious intervention of Paramashiva to rejuvenate and expand life. Humanity is way overdue for the next breakthrough. Now, Paramashiva has descended again. Bhagavan Sri Nityananda Paramashivam is here for you. Just as the rain is drawn to the parched earth, he is drawn to our plain. Compelled by nothing but boundless compassion to fulfill the longing of 1,000,000 hearts, to blast through our impossibilities and re-establish us in a lifestyle of enlightenment. Resplendent with the Uttamuttama, the best of the best, he has a proposal for you. Will you become me? Blessed are we to have Paramashiva himself as Guru. On Guru Purnima, bask in his love and compassion. Open yourself to receive all he has come down to shower upon you. On July 16th, join us and celebrate